हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। बच्चों, हम लेसन 4 बाद में पढ़ लेंगे। आज हम स्टैंडर्ड लेसन 5 कोल और पेट्रोलियम पढ़ेंगे। Coal and petroleum. We use various things or materials such as food, clothes, furniture, fuels, water, and vehicles to fulfill our basic needs. Observe various things in your surroundings and make a list. The materials which are present in nature and useful for us to meet our basic needs are called natural resources: air, water, soil, coal, petroleum, mineral. Inexhaustible natural resources. Exhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples of these resources are sunlight, air, water, rainfall, clay. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. The materials which are burnt to produce power or heat energy are known as fuels. The remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago are called fossils. Fuels like तो बच्चों देखो, मटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट इन नेचर आर यूजफुल टू अस इन फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। जो मटेरियल हमें नेचर से मिलता है, नेचर में प्रेजेंट होकर हमें जो मिलता है वो हमारी रोज की ज़रूरत को पूरी करता है। उसे नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स कुदरती स्रोत जिसे बोलते हैं। उसमें आता है एयर, वाटर, सॉइल और कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सभी है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। और नेचुरल रिसोर्सेज है वो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स। तो इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? तो कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता है, जिसका जो कभी खत्म ही जल्दी से नहीं होता। और तो उसके एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले एंड सैंड। और एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है जो लिमिटेड क्वांटिटी में ही नेचर में प्रेजेंट होता है और वो जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाता है, मीन्स जल्दी से खत्म हो जाता है। तो उसके एग्जाम्पल्स है वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो हम ये लेसन में जो एनिमल्स और प्लांट्स बरीड होकर अंडर अर्थ में मिलियंस ईयर्स एगो जो बरीड हो गए मीन्स नीचे चले गए, और उसके डेड डिके में से जो फ्यूल्स बनता है उसे फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। Like coal, petroleum, and natural gas are all formed from the dead remains of plants and animals buried under the earth millions of years ago. So these are all known as fossil fuels. Coal. Coal is a fossil fuel. It is hard and black in color. Coal is found in deep coal mines under the surface of the earth in the form of coal beds. In India, coal is mainly found in Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Madhya Pradesh. The big coal mines in our country are at Charia and Bokaro in Jharkhand and at Raniganj in West Bengal. Coal is formed by the gradual decay and compression of remains of plants and trees in the absence of air. The slow chemical process of the conversion of the dead vegetation, remains of dead plants, into coal under the influence of high temperature and pressure is called carbonization. Coal mainly contains carbon, but along with it, hydrogen, oxygen, small amount of nitrogen and sulfur are also present. देखो बच्चों, अब हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अर्थ के अंदर नीचे बरीड हो जाते हैं, जिसमें से फॉसिल फ्यूल बनाया जाता है। उसमें से हम एक टॉपिक देखेंगे, कोल। तो कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है और वो हार्ड सब्सटेंस है और ब्लैक कलर में हमें वो मिलता है। कोल इज फाउंड इन डीप कोल माइंस, मीन्स जो खान होती है ना कोयले की, वहां पर हमें वो मिलता है। अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ के नीचे के भाग में जो कोल बेड्स होते हैं वहां से हमें ये कोल मिलता है। इन इंडिया कोल इज फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ये सभी स्टेट्स में हमें कोल मिलता है। इट इज फाउंड इन ग्रेजुअली डिके ऑफ कंप्रेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ये ज्यादातर जो प्लांट्स और एनिमल्स का डिके मीन्स सड़ा हुआ भाग जो होता है
और वहां पर एयर एब्सेंस होता है, इसलिए वो सड़ जाता है, जिससे ये कोल बनता है। द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन मीन्स, तो ये कोल जो है वो वन टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस है, मीन्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स, तो उसमें से वो कन्वर्ट होकर कोल बन जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर मीन्स जमीन के अंदर जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है उससे कार्बोनाइजेशन होता है और उससे ये कोल बनता है। Huge forests grew around 300 million years ago, covering most of the earth. Due to natural calamities like earthquakes and volcanoes, these forests got buried under the soil. The remains of dead plants converted into peat coal, 60% carbon. The peat compressed between sediment layers to form lignite coal, 70% carbon. Further compression resulted in the formation of bituminous coal, 80% carbon. Eventually, anthracite coal, 90% carbon, is formed. Uses of coal. Coal was used in railway engines to produce steam to run the engine. Coal is also used in many houses in villages as fuel to cook food in chullas. Coal is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is used in many industries to produce organic compounds such as phenol, benzene, toluene, and naphthalene. In industries, coal is used to manufacture coal tar, ammonia coal liquor, and coal gas by the process of destructive distillation. Let us learn how coal is formed in nature by the following figure. Destructive distillation of coal. Destructive distillation is the process of breaking coal by heating it to high temperature in the absence of air. Let us perform an activity in order to show the process. Coke. It is a tough, porous and black substance obtained by the destructive distillation of coal. Coke is almost pure form of carbon. It contains 98% carbon. Uses of coke. Coke is an essential raw material for the iron and steel industry. When iron and steel are made, coke is one of the raw materials needed to properly heat the furnace. Coke is used for extraction of many metals from their ores. Coal tar. Coal tar is... Now we will see about coke. मीन्स डिस्टिलेशन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कोल मीन्स कोल को हम ब्रेक करते हैं, मीन्स तोड़ते हैं, कोल को तोड़कर उसको गर्म करके हाई टेम्परेचर में गर्म करके उसके टुकड़े किए जाते हैं, जिससे कोक, कोल टार और कोल गैस बनाया जाता है। तो उसमें कोक क्या है देखो, कोक इज ए टफ पोरस एंड ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। तो एक ये पदार्थ है जो टफ मीन्स बहुत ही हार्ड होता है, एकदम टफ होता है और वो पोरस ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन्स कोल को गर्म करके उसमें से अलग किया जाता है। कोक इज ऑलमोस्ट इन प्योर फॉर्म। कोक हमेशा प्योर फॉर्म में ही कार्बन फॉर्म में मिलता है। इट कंटेन्स 98% ऑफ कार्बन। तो जो कोक है उसके अंदर 98% कार्बन मीन्स वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो यूजेस ऑफ कोक किस में यूज किया जाता है, तो कोक इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू हीट फर्नेस। मीन्स कोक की मदद से जो स्टील इंडस्ट्रीज है या आयरन इंडस्ट्रीज है वहां पर उसको फर्नेस की तरह मीन्स आग मीन्स कोयले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोक इज यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को और में से अलग करने के लिए ये कोक का इस्तेमाल किया जाता है। और कोक इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैसेस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए भी कोक का इस्तेमाल होता है। अब हम अगले टॉपिक में कोल टार के बारे में बच्चों पढ़ेंगे।